So we are going to discuss about the scrotum and the testis. So scrotum is a bag-like structure which holds the testis in their position outside the body for the thermoregulation required for the maturation of the spermatozoa. So functionally it is the thermoregulation, while structurally it is made up of 5 layers. And these 5 layers are nothing just the extension of the layers of the anterior abdominal wall. So the layers of the anterior abdominal wall, they continues as the layers of the scrotum. So you may be asked in your pre-PG examination, which layer of the anterior abdominal wall continues as the internal spermatic fascia of the scrotum, or the cremasteric fascia and the muscular layer. So skin, although it continues from the anterior abdominal wall and covers the scrotum, but still it is different. The skin anywhere else or the body is the stressed, but in case of scrotum, the skin is folded, and just underneath this folded skin there is cremasteric muscles which relaxes and contracts alternatively. So in case of summer, this skin relaxes where the body temperature is more, this skin relaxes and the testis comes down away from the body. And in case of winter, this skin or this cremasteric muscles contracts and the scrotum becomes small because the contraction of these cremasteric muscles, and the testis got just adherent or close to the body wall or the perineum. So this is about the first layer, the skin. Then the dartos muscles. The superficial fascia of the abdomen continues as the dartos muscles of the scrotum, or the second layer of the scrotum from superficial to deep. This question has been already asked. Dartos muscles of the scrotum are the modification of the skin of the abdomen, the superficial fascia of the abdomen, the external oblique muscles, the internal oblique muscles. So the answer is the superficial fascia. And the external spermatic fascia, which is the third layer of the scrotum as we go from superficial to deep. Third layer is the external spermatic fascia. It is continuation of external oblique muscle of the abdomen. Then the cremasteric muscle is continuation of internal oblique, while the last one or the innermost layer of the scrotum is the internal spermatic fascia. It is the continuation of देखो एब्डोमेन की स्किन कंटिन्यू हो गई, स्क्रोटम की स्किन, ठीक है. फिर डार्टोस मसल्स, सॉरी, द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एब्डोमेन कंटिन्यूज एज डार्टोस मसल्स. Then the third external oblique muscle is external spermatic fascia. Then the internal oblique is cremasteric muscles and fascia. Next comes the transversus abdominis, and that is where the glitch lies. Transversus abdominis does not continue into the scrotum, while the deepest layer of the abdomen, the fascia transversalis, forms the internal spermatic fascia. ठीक है. तो इसका भी एक एमसीक्यू बन सकता है आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमेन डज नॉट कंटिन्यू इनटू द स्क्रोटम. ठीक है, गॉट इट. तो 5 लेयर कौन कौन सी होगी?
तुम बताओ। गुड। ठीक है, इनका कंटिन्यूएशन भी पता होना चाहिए। आप लोगों की बुक में एक टेबल बनी हुई है, कौन सी लेयर किस में कंटिन्यू कर रही है, एब्डोमेन की लेयर स्क्रोटम में किस लेयर में कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, ऑल्दो आपके शॉर्ट नोट डायरेक्टली स्क्रोटम पे नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम में, यूजी एग्जाम में, बट प्री पीजी में इसमें से क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, जो मैंने एक दो एग्जाम्पल बता दिए। एक तो डार्टोज मसल्स का पूछा हुआ उन्होंने, दूसरा उन्होंने कौन सी लेयर कंटिन्यू नहीं होती स्क्रोटम में, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, now the nerve supply of the scrotum. So this ventral axial line divides the skin of the scrotum into two different zones of innervation. The anterior one third is innervated by the L1 or the first lumbar spinal nerve. Posterior two third is by the S3. ठीक है, तो ये नर्व सप्लाई हो गया। आर्टीरियल सप्लाई, adjacent artery. The adjacent here are the external and internal pudendal artery. ठीक है, external and internal pudendal artery. So that was about the scrotum. Now come to the testes. There are the external features. There are two poles, vertically elongated structure having two posts, the upper and the lower one. Then the anterior posterior border and the lateral medial surfaces. The superior, posterior and the inferior portion of the testis is covered by the epididymis. Is covered by the epididymis. So the contents of scrotum are the testis, epididymis, the ductus deferens and the proximal part of the spermatic cord. Proximal part of the spermatic cord. So as you can see here, is upper pole of the testis, is lower pole, anterior border and the posterior border. Then come to the parts of epididymis, the head, body and the tail. Head, body and tail of the epididymis. This epididymis collects the sperm from the mediastinum of the testis. Here again the word mediastinum comes. Mediastinum of the testis. The posterior most part of the testis is called as mediastinum of the testis, where all the lobules of the testis, they collect and merge in the mediastinum. ठीक है, नेक्स्ट इमेज में होगा। So this elongated oval structure is divided into approximately 300 lobules. 300 lobules. Here is a section showing you all the three layers of the testis. The outermost layer of the testis is vaginalis, tunica vaginalis. And the tunica albuginea, and the last one is the vasculosa. Vaginalis, albuginea and the vasculosa. Vasculosa is the ramification or the branches of the testicular arteries after it divides into two, medial and the lateral branches, and the various branching pattern is called as tunica vasculosa. Tunica albuginea, which is the middle layer, it is a fibrous sheet which covers the testis.
then the tunica vaginalis is actually a fold of peritoneum, which folds upon itself and covers the testis from front and the side. तो एपिडिडाइमिस कहाँ कवर कर रहा है? सुपीरियर पोर्शन, इंफीरियर एंड द बैक. तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो गया? ट्यूनिका वेजाइनलिस से कवर्ड होगा. इट इज ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, सो इट फॉर्म्स ए कैविटी. ठीक है. और उस कैविटी में फ्लूइड कलेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील. देखो, हाइड्रोसील और वेरिकोसील दो चीजें हैं. टेस्टिस के रेस्पेक्ट में दो डिजीज है. दोनों में कंफ्यूजन बहुत कॉमन है. दोनों ही डिजीज में पेशेंट की कंप्लेंट सिमिलर होती है. ठीक है. स्क्रोटम इज स्वेल्ड अप, देयर इज ड्रैगिंग पेन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. But in case of hydrocele, there is collection of fluid in the tunica vaginalis, within the tunica vaginalis. ठीक है. और दूसरा जो है वेरिकोसील. जैसे वेरिकोसिटी आपने इसमें पढ़ा था लोअर लिम्ब में. सिमिलरली वेरिकोसिटी इज बिकॉज ऑफ वेन्स, टेस्टिकुलर वेन्स का डायलेटेशन क्या है? वेरिकोसील. समझ में आ गया? एक ट्यूनिका एल्बोजिनिया का है डिसऑर्डर, दूसरा किस रिलेटेड है? वेन्स. पहली बात तो ठीक है. दूसरा जो ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है उसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोसील. और जो वेरिकोसिटी वो वेन्स की वजह से, टेस्टिकुलर वेन्स, जिसको तुम लोग पहले भी 11-12 में पढ़ा, टेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स. ठीक है. अब हाइड्रोसील इज कलेक्शन ऑफ वाटर और फ्लूइड इन दी ट्यूनिका वेजाइनलिस. अब उसमें वाटर की बजाय अगर पस है तो उसको हम कहेंगे पायोसील, ब्लड है तो हीमोसील. ठीक है. तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि 4 डिजीज है टेस्टिस रिलेटेड, 2 ही है. वन इज हाइड्रोसील, अदर वन इज वेरिकोसील. हाइड्रोसील में अगर वाटर है और क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोसील. फर्स्ट है देन पायोसील, और ब्लड है तो हेमेटोसील और हीमोसील. वेरिकोसील इज टॉर्ट्यूअस डायलेटेड पेम्पेनिफॉर्म. यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ये ट्यूनिका वेजाइनलिस फोल्ड हो रही है वापस. ठीक है. और ये कैविटी बन गई है यहाँ पे. पैराइटल और विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, और इसी में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है तो हम उसको हाइड्रोसील कहते हैं. ये लेयर्स हमने पहले देख ली है. स्क्रोटम की लेयर्स इधर वाली सारी. मीडियास्टिनम मैंने बता दिया. ठीक है. पोस्टीरियर और पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस फ्रॉम वेयर द यूरोवेस्कुलेचर ऑफ द टेस्टिस एंटर और द एग्जिट. दिस इज द हाइड्रोसील. ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं. हाइड्रोसील इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विदिन द ट्यूनिका वेजाइनलिस, एल्ब्यूजिनिया और वेस्कुलोसा. ठीक है. और फोर्थ ऑप्शन टेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस डायलेटेड टॉर्ट्यूअस टेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस भी डाल सकते हैं. So here are the 2 rings, the deep inguinal ring and the superficial inguinal ring. इनके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जस्ट क्यूबिक क्रेस्ट के ऊपर होता है. ठीक है. और डीप इंग्वाइनल रिंग एट द मिडल ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. दोनों के बीच का स्पेस क्या है? इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है. So from posterior surface of the testis
देखो टेस्टिस पे क्या था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पूरा उसको कवर कर रहा है, व्हाइट फाइब्रस शीट जो उसको कवर कर रही है, मिडल लेयर ऑफ द टेस्टिस. एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस दिस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया फॉर्म्स ए थिक फाइब्रस रेफे. ठीक है, और उस थिक फाइब्रस रेफे से जो है एंटीरियरली एंड लेटरली फाइब्रस डायरेक्शंस होती है, सेप्टा होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, फाइब्रस सेप्टा होते हैं, विच डिवाइड्स द टेस्ट इनटू वेरियस लोब्यूल्स. ठीक है, देयर आर अराउंड 200 to 300 lobules, 200 to 300 lobules, and each lobule is having 2 to 4 seminiferous tubules. ठीक है, seminiferous tubules. They are coiled or the corrugated tubules. All these tubules, they drain the sperms into the space of mediastinum, which is called as rete testis. Rete testis. ठीक है, rete testis पे भी MCQ पूछते हैं. What is rete testis? Then from this rete testis, the efferent ductules, they enters into the head of the epididymis, and finally the ductus deferens formed and exits the scrotum through the superficial inguinal ring as a content of the spermatic cord. ठीक है, spermatic cord का ट्रांसवर्स सेक्शन आपके एग्जाम में आता है, इसका डायग्राम, कंटेंट्स ऑफ spermatic cord. सीधा क्वेश्चन को ही एड्रेस किया करो, समझ रहे हो. कैवर्नस साइनस का डायग्राम बनाना है तो आपको डायग्राम में ही शो करना है. ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ कैवर्नस साइनस शोइंग इट्स रिलेशन. अब उसमें एडिशनली ब्ला 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 लिखने का कोई फायदा नहीं. इन्हें पूरा लिख दिया कैवर्नस साइनस, सब ट्रिब्यूटरीज, ये चैनल्स, ये इट गॉट 0 out of 5. तो डायग्राम पूछा है तो पहली कंडीशन डायग्राम ही है. हो सकता है कोई एग्जामिनर, मैं नहीं कह रहा कोई दे भी दे, ऐसा नहीं है कि कई बार एग्जामिनर दे देते हैं कि ठीक है इसने लिखा तो बच्चे. तो इसमें सारे जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं इनका मीनिंग और रिलेशन पता है सबको. तुम बताओ भाई, रेटे टेस्टिस क्या है? हाँ तुम ही. यस यू. व्हाट इज रेटे टेस्टिस? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डायलेटेड हो जाती है. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कैसे डायलेट होती है? वो तो बिल्कुल फाइब्रस शीट है जो टेस्टिस को कवर कर रही है. तुम इधर आओ बच्चे, बाहर. यस यू, बोथ ऑफ यू, सेकंड एंड थर्ड गर्ल्स, कम विद योर कॉपी. क्या ड्रॉ कर रहे हो उसमें? क्या तुम दोनों स्माइल कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो? इधर आओ, बाहर आओ जल्दी. फर्स्ट आई इग्नोर्ड यू, कम टू, देखा मैंने, इग्नोर किया, तुम फिर उसको तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या. जाइए अपना बैग और रोल नंबर बताते जाओ. 212 किसका है? तुम्हारा. तुम्हारा बच्चे? हाँ बताओ. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का डायलेटेशन. गुड गुड. ठीक है, समझ आ गया? क्या समझे? इसके अंदर क्या होता है? फिर कहाँ जाती है फ्रेंड एक्टिव? सीधा
क्लास में बैठे हो तो अलर्ट रहो, ठीक है। So this is the blood supply and the venous drainage. Right and left testicular arteries, they rise from the abdominal aorta at the level of L2. Enters through the deep inguinal ring, exit from the superficial and supplies the testis. Veins के केस में अपोजिट होगा, Tympaniform plexus of veins enters into the superficial inguinal ring, exit through the deep, enters into the abdomen, ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग को एग्जिट करके एब्डोमेन में एंटर करके ड्रेन कर रही है किसमें, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन में, और ये राइट टेस्टिकुलर वेन में। और कौन सी वेन ड्रेन करती है लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन में? एक तो ये हुई लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, इधर भी कोई ड्रेन करती है क्या? बिल्कुल राइट एंगल पे ड्रेन कर रही है। यहाँ पे सुप्रारीनल वेन आती, कौन सी आती? सुप्रारीनल वेन, ठीक है। Why the varicosity of the tympaniform plexus of the testis or the varicocele of the testis is more common on the side of or the left testis? Left testis का varicocele common क्यों होता है? देखो इसमें एक्स्ट्रा, एक तो बिल्कुल ये वर्टिकल है, ठीक है, राइट एंगल पे ओपन हो रही है। दूसरा इसमें इतना वीनस ब्लड का प्रेशर है, क्योंकि किडनी का भी इधर से ब्लड बाहर आ रहा है। सुपररीनल वेन का तो चलो अमाउंट उतना नहीं होता, बट किडनी का जो है रीनल वेन का प्रेशर, तो इस तरफ प्रेशर ज्यादा है। क्या है? वीनस प्रेशर ज्यादा है, तो इधर के लेफ्ट साइड के टाइम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस के डायलेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये तो एक रीजन हुआ। दूसरा हुआ कि इन केस ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं, इफ सिग्मोइड कोलोन इज लोडेड विद द फिकस और द फीकल मटेरियल, तो लोडेड सिग्मोइड कोलोन जो होता है वो क्या करता है, प्रेस करता है इसको, वेन को, टेस्टिकुलर वेन को, ठीक है। समझ गए? इट वाज ऑल अबाउट टेस्टिस एंड स्क्रोटम। 6-7 स्लाइड बना के लाता हूँ हर लेक्चर में ऑलमोस्ट, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कंटेंट भी नहीं लिखा होता है। जो डायग्राम में है वही मैं बोलता हूँ, वही तुम्हें कोरिलेट करना है। फिर भी तुम्हें थोड़ी देर में ब्लैंक रह जाते हो। टेक्स्ट लिख के लाएं क्या सारा, बुक छाप के एकदम, इधर डायग्राम इधर सब कुछ लिखा हुआ, एंड देन स्टैंड लाइक दिस, ब्ला 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 ब्ला। देखो, नो कम टू द क्लिनिकल एस्पेक्ट। हाइड्रोसिल वेरिकोसिल हो गया, देन देयर आर ट्यूमर्स, ठीक है, ट्यूमर्स ऑफ टेस्टिस भी होते हैं। इन केस अनडिसेंडेड टेस्टिस, किसके केस में होते हैं? अनडिसेंडेड टेस्टिस। और जो आज के लेक्चर का सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है वो आता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस क्या होता है, कौन बताएगा? गुड गुड, that is the journey of the testis from its origin or its development up to its normal position in scrotum, ठीक है। और ये सब पूरा प्रोसेस कब होता है? इंट्रायूटेराइन लाइफ में, ठीक है। अगर अनडिसेंडेड है, अगर टेस्टिस डिसेंड हुए ही नहीं, एक यूनिलेटरल या बाइलेटरल, उस केस में क्या होता है? ट्यूमर्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं टेस्टिस के, एब्डोमिनल वॉल में ही रह जाता है टेस्टिस,
या वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर ही अटक गया। समझ रहे मेरी बात? डिसेंट का पूरा एक कोर्स है। फर्स्ट मंथ के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है एब्डोमिनल पोस्ट एब्डोमिनल वॉल के क्लोज में टेस्टिस का, ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ और द इंट्रायूटेराइन लाइफ। सेकंड, एट द सेकंड और थर्ड मंथ दे कम एट द इलाइक फोसा, ठीक है, जहाँ पे ओवरी का नॉर्मल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन जहाँ पे है लोकेटेड ओवरी। इन केस ऑफ फोर्थ और सिक्स्थ मंथ दे कम अप टू द डीप इंग्वाइनल रिंग, या 4 to 6 months से। सेवंथ मंथ दे ट्रेवल थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, एट द 9th month दे कम अप टू द स्क्रोटम, ठीक है। 8th मंथ पे वो यहाँ पे आ जाते हैं डीप, इस पे डीप इंग्वाइनल, सॉरी सुपरफिशियल। 4 to 6 months, 7th month, 8th month and the 9th month. At the time of delivery of a boy, the scrotum should be in the, sorry, the testis should be in the scrotum, ठीक है। अगर वो नहीं है तो वो अनडिसेंडेड टेस्टिस का केस है। It should be thoroughly investigated and diagnosed properly। रीजन क्या है अनडिसेंडेड टेस्टिस की? हार्मोनल कॉजेज हैं, स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं। तो सबसे कॉमन जो आज की क्लास में जो आपके क्वेश्चन जो आता है एज ए यूजी स्टूडेंट, दैट इज अनडिसेंडेड टेस्टिस, और इट मे बी फ्रेम्ड एज डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे कॉमन आता है यूजी के लिए शॉर्ट नोट के फॉर्म में। कभी भी स्क्रोटम के नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई या ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन यूजी के लिए नहीं पूछते, समझ गए? तो अगर पेशेंट को रिपीटेडली रिकरेंट वेरिकोसील हो रहा है, रिकरेंट वेरिकोसील हो रहा है, तो उसको कोई रीनल डिजीज भी हो सकती है, ठीक है, कोई रीनल डिजीज भी हो सकती है। उसको रीनल, उसकी जो किडनी है उसके भी इन्वेस्टिगेशन कराना है। अगर बार बार उसको 2 बार या तीसरी बार उसको उसकी टेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस डायलेट हो रहा है तो कोई रीनल डिजीज हो सकता है। दूसरा जो हाइड्रोसील को ट्रीट कैसे करता है? हाइड्रोसील इज ट्रीटेड बाय 2 थिंग्स, द मेडिकल एंड द सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिकली हम उसको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। एक्चुअली हाइड्रोसील कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, तो उसमें आप एंटीबायोटिक देते हैं। अलॉन्ग विद द मेडिकल ट्रीटमेंट इट इज सर्जिकली एस्पिरेटेड, जो फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करके बाहर भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये था टेस्टिस एंड स्क्रोटम। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो बताओ। फोटो, फोटो तुम्हारी बुक से ही लिया विश्राम से, चांद से थोड़ी कोई राज लाए, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई बुक्स से लिए हैं, ग्रीज या वो, तो उनकी जरूरत नहीं होती है यूजी स्टूडेंट को। जो बेसिक्स अगर आपने कर लिए तो क्वेश्चन आपके जो प्री पीजी के पहले एम्स का अलग होता था, उसमें क्वेश्चंस में ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी है, ब्ला ब्ला ब्ला। एनाटॉमी का क्वेश्चन भी ऐसे होता था, ठीक है। एनाटॉमी का क्वेश्चन भी ऐसा होता था कि जैसे रामायण का कोई स्टोरी नरेट किया हो और लास्ट में पूछा हो कि आपका घर कहाँ है, समझ रहे? एनाटॉमी के क्लिनिकल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ये और अल्टीमेटली आपको उस ऑर्गन की लोकेशन और वो पता होनी चाहिए।